हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कंक्रीट क्यूब फेल होने का क्या कारण है। What next if concrete cube fails in test after 28 days? ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, बनाया हुआ है। What next if concrete cube fails in test after 28 days? Such a suitable errors many times on the construction site. This article explains to you what to do and not do during such type of suitable on the construction site. So what to do if the cube test fails? There are many repair and rehabilitation option if the concrete cube fails in the test. Concrete cube fails regions. Concrete cube compressive strength. The concrete cube test provides details about all the shears of concrete. From the result of this cube test, we can judge whether concreting has been done properly or not. The strength of concrete for general construction varies according to the grade of concrete from 15 MPa 22,000 psi to 30 MPa 44,000 psi and higher in commercial and industrial structures. Compressive strength definition. Compressive strength is the ability of material, concrete or structure to carry the loads on its surface without any crack or deflection. There are two conditions are to met for accepting a concrete after cube test as per IS 456 2000 CI 16.1. For concrete of grade M20 and above. Now the question of workmanship. दोस्तों, even if one of the cube is okay, wait for 28 days result. If 28 result fail, then again there is a possibility that cube are not failed properly.
filled properly? Are they we are not cured properly in the first 7 days, but it is possible that slab concrete is okay. Go for the hammer test. If the hammer test also as per failed cube result, then go to core cutter and test it to get actual strength of the laid concrete. Compression test of concrete cubes. दोस्तों, हमको कंक्रीट सैंपल करते समय सबसे पहले क्या क्या सावधानियां ध्यान देना है। हमारा क्यूब मोल्ड का साइज प्रॉपर होना चाहिए। क्यूब कंक्रीट जो सैंपलिंग करेंगे वो अच्छी तरीके से प्रॉपर टैंपिंग करके करेंगे। और उसको 24 आवर के बाद डिमोल्डिंग करेंगे। डिमोल्डिंग करने के बाद उसको हम क्यूरिंग के लिए ले जाएंगे, क्यूरिंग टैंक में रखेंगे, अच्छे से उसकी क्यूरिंग करेंगे। और दोस्तों, मैंने इसमें टेबल बनाया हुआ कि 3 डेज में कितने परसेंट स्ट्रेंथ होना चाहिए, 7 डेज में कितना होना चाहिए, और 14 डेज में कितना हो जाएगा, 28 डेज में कितना होना चाहिए। Okay, thank you for all.